Hello everyone. This is a Japanese language course which I had brought for you because there are a lot of anime fan who wants to learn Japanese and they actually didn't get any chance to learn. So for them, I bring this course. This is a very authentic course from very authentic sources. We're going to learn first the introduction actually. Introduction to Japanese language. First of all, for understanding a language, actually, first of all, for understanding what Japanese language is, we have to understand what language actually is. पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या होती है, उसी के बाद हम ये समझ पाएंगे ना कि हम जापानीज़ लैंग्वेज को कैसे लर्न करें. So the first question is, what is a language? What is a language? अब बहुत से लोगों को पता है कि लैंग्वेज क्या होती है. सो इट्स अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद अदर्स. इज व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज क्या होती है? एक मीडियम होता है टू कम्युनिकेट विद अदर्स. To communicate with others. So also it connect us with other people. ना ये एक मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ ही साथ उनसे जुड़ भी पाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू कनेक्ट विथ also used for connecting with people. ओके तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि एक लैंग्वेज क्या होती है. व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? सो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद अदर, ऑल्सो यूज फॉर कनेक्टिंग विद पीपल. आप कह सकते हो ना, अगर आप एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपने थाट्स को आप सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो. दैट्स व्हाट अ लैंग्वेज इज़. इट्स अ ब्रिज. It's a bridge which connects two people. Okay, this one people and there's this other people. So if you want them to connect with each other, you need a bridge. Okay, so they have to walk on a same bridge to understand each other. Like if you want to go in a particular direction, so you have to share a same bridge. Okay, मतलब कोई बंदा है जो इस तरफ जा रहा है और दूसरा उसको इस तरफ जाना है ना, उसके लिए क्या होना है, दोनों को एक सेम ब्रिज शेयर करना पड़ेगा. इट्स समथिंग लैंग्वेज टू फॉर यू. लैंग्वेज क्या करती है? आपके जो थॉट्स हैं उसको शेयर करती है अदर पर्सन के साथ. सो लैंग्वेज क्या है? ये एक ब्रिज है और बहुत से लोग इसको क्या बैरियर की तरह समझ लेते हैं. इट्स नॉट अ बैरियर, इट्स अ ब्रिज टू कनेक्ट पीपल्स. ठीक है, तो लैंग्वेज को कभी भी बैरियर नहीं समझना है. हमें क्या समझना है? इसको आसान भाषा में समझना है. व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? ओके, सो हमें पता चल गया है लैंग्वेज क्या है. लैंग्वेज हमें ब्रिज के रूप में देखना है हमें लैंग्वेज को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ अ लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट अ बेसिक लैंग्वेज. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड cultivate basic language. Okay, ability. ये सवाल है, अच्छा सवाल है. तो वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम कल्टिवेट कर सकते हैं बेसिक लैंग्वेज एबिलिटी? मतलब वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम एक लैंग्वेज को कल्टिवेट कर सकते हैं? जो फर्स्ट वन है इसके अंदर है वो है, वो क्या है? दैट इज़ स्पीकिंग. What is speaking? When we speak to each other, we share same medium, same bridge. Next is understanding. It's something like कि आप बोल रहे हो, आप कोई भाषा बोल रहे हो, आप हिंदी बोल रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो. आप क्या कर रहे हो? आपने कुछ बोला, आपने बोला इंग्लिश. अब आपने इंग्लिश बोला, सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं आया आपने क्या मतलब क्या बोल दिया, तो वो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया. तो वो क्या बोलेगा? मान लीजिए सामने वाला पर्सन क्या है, वो है जापानीज़, तो बोलेगा वकारा नहीं, I don't understand what you're speaking. We're not on the same grounds. You have to improve yourself. Okay, you have to improve yourself, learn a new language, then come to me and then talk to me. So understanding is also very important. The next one is reading.
Reading gives you a basic idea how you can write a sentence, because it is very required. For writing you have to know how to read it, or for speaking you have to know how to read it. You need to pronounce right pronunciation. You need to pronounce right pronunciation. Like if you are writing, okay, let me see a word for you. Let me see a word. What kind of word we can use here? Okay, so there. If I write this, what is this to you? This is nothing to you. It's just some character that you don't even understand. Okay, but for a Japanese person who knows what it is, इसको पता है ये क्या है, तो वो समझ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं. कज़ान. What is Kazan? Kazan is a volcano. We're talking about volcano. Or if I write this is Jinku. Jinku, which mean population. So कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पहला वाला वर्ड और दूसरा वाला जो वर्ड है वो सेम ही है. ओके, ये वाला जो वर्ड है ऑलमोस्ट सेम है. इट जस्ट नीड्स दीज टू कैरेक्टर्स, दीज टू स्ट्रोक्स, एंड इट विल वर्क लाइक सेम. सो आपको पता होना चाहिए इनका क्या मतलब है, तभी आप क्या कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे, है ना. सो एक बेसिक लैंग्वेज को कल्टिवेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्पीकिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत, रीडिंग एंड राइटिंग. ये 4 चीज़ अगर आपने कर ली तो आप एक लैंग्वेज को समझ जाएंगे. ओके, सो जापानीज़ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जापानीज़ वो लैंग्वेज है जो कि 3 स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है. हाउ मेनी स्क्रिप्ट्स? देयर आर 3 स्क्रिप्ट्स इन जापानीज़. देयर आर 3 scripts in Japanese. So let me write first Japanese. Yeah. So Japanese की 3 स्क्रिप्ट क्या हैं? फर्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो है हीरागाना. द फर्स्ट स्क्रिप्ट इज हीरागाना. The second one is, okay, let me do this. The second one is katakana. First one is hiragana, second one is katakana, and the last one is kanji. These are 3 scripts that are used in Japanese language. If you want to learn Japanese language, you have to learn hiragana, katakana and kanji together, because you cannot write hiragana, katakana, or kanji alone. So you have to learn these together. ठीक है, तो अगर हम हीरागाना की बात करें, हीरागाना जो है इट्स नॉट हिरांगना, इट्स हीरागाना. सो हीरागाना वो वर्ड्स हैं या फिर वो स्क्रिप्ट है ऑफ जापानीज़ ओरिजिन. वो वर्ड्स हैं जो कि जापानीज़ ओरिजिन है. काताकाना वो वर्ड्स हैं जो कि काताकाना जो स्क्रिप्ट है वो किसके लिए है? फॉर वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन. वो वर्ड्स जो कि फॉरेन में ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे कि कॉफ़ी होता है, उसको हम जापानीज़ के अंदर कोही बोलते हैं, केकी बोलते हैं. सो कोही, केकी, ये क्या है? ये फॉरेन ओरिजिन वर्ड है. सो उनको उसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है. द लास्ट वन इज़ कांजी. कांजी इज़ द लास्ट वन. दीज आर चाइनीज़ पिक्टोग्राम. व्हाट्स दिस? चाइनीज़ pictograms and ideograms. What does that mean? Okay, what does that mean? जैसे कि अभी हमने लिखा था कज़ान, okay, that mean volcano, और हमने लिखा जिनको, that mean population. Okay, so if I write this, isn't this character something like, isn't it relating this? If I remove the head and the hand, then what I'll get? This character. This character shows somewhere
पीपल। किसके बारे में बताता है ये? लोगों के बारे में बताता है। ओके, दिस शोज अबाउट पीपल। और आप देख सकते हैं जब हम किसी ड्रॉ करते हैं किसी पीपल को तो कैसा होता है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ आई ड्रॉ this, then isn't it something like you have some bunch of woods, okay, and what are they doing? They're burning together. Yes, guys. Okay, something like this. So this word shows something about fire. So आपने किसी भी एनीमे के अंदर ये वर्ड देखा होगा, तो ये वर्ड हमेशा रिलेट करता है फायर के साथ। फायर नेशन हो सकता है ना, वोल्केनो हो सकते हैं। और हमने अभी एक वर्ड पढ़ाई था, कज़ान। कज़ान मीन्स क्या होता है? वोल्केनो। ओके, कज़ान मीन क्या होता है? वोल्केनो। इसका मतलब क्या होता है? वोल क्या है? नो। ओके, दिस इज वोल्केनो।